Hello guys, welcome back to your own channel Physics Nagari by Sudhanshu Yadav. So in last class we have talked about the electric dipoles, that what actually electric dipole is, and we have talked about the electric field due to an electric dipole. After that we know that the electric dipole doesn't have any net charge on it, but after that also electric field have some, the electric dipole have some electric field. So in today's class, we are going to talk about the electric field on a axial line of any electric dipole. Okay. So for that, just consider a dipole. Let's suppose this is negative charge, and here it is a positive charge. Okay, with same magnitude. There is no change in magnitude. This is also Q. This is also Q. But this is plus Q and this is a minus Q. And the distance between these two charges is again finite distance that we know. So this distance is nothing but 2L. Okay guys. Okay. Now we have to find an electric field on the axial line. So just to draw an axial line like this. This is an axial line. And we have to find an electric dipole, let's suppose, at this particular point, and we will name this point as a point P. Okay, so now the big question is that we have to consider this particular point at some distance. Okay, so this particular point P having some distance with plus Q and some distance with minus Q. So in what distance we have to deal with. Okay, so इसके लिए हमें क्या करना है? Just take a midpoint of this dipole like this, and every distance should be measured from this particular point only. Means this is the reference point. Okay, so with compared to this particular point, let's suppose this point P is kept at a distance of R like this. Let's suppose this distance is R. Okay guys, this distance is R. Okay, now we have to find electric field at this particular point P, and we know that in the electric dipole, electric field is not due to the system of charge. हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसकी वजह से होता है? इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से होता है. ओके, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा. तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, और फिर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे. ये बहुत सिंपल है. ओके, अब इसको देखते हैं कि कैसे करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं, जस्ट कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. सो वी विल मार्क इट लाइक electric field plus q. So आपको पता है this plus q is nothing but the point charge, so we will apply the point charge formula here. And what is that formula? That you know, that is 1 upon 4 pi epsilon naught and q upon square of the distance. But here the main thing is, what is the distance here? See, if this is the distance r and this half distance is l, this half distance is l, and this entire distance is 2l. So what is the distance? What is the distance of this? So we can calculate this is like a r minus l, because if you are going to subtract this particular l from this r, you will get r minus l. So distance here is r minus l to the whole square. Okay guys, this is the one thing. Okay, now we have to find the electric field due to minus charge. Okay, so electric field due to minus charge is E minus Q. That is again the same thing, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon square of the distance. So in this case, what is the distance from this negative charge? See, this length is L, from here to here it is R. So this entire length is nothing but R plus L. Okay guys, so we have to make here R plus L to the whole square. ओके गाइस, नाउ अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना है. अब बात आती है इनकी डायरेक्शंस की. तो देखिए गाइस, ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू दिस प्लस चार्ज इज इन दिस पर्टिकुलर फैशन. इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ऐसी होगी. सो वी विल मार्क हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज लाइक दिस. Okay, and for this negative charge the electric field direction is somewhere in this particular direction.
So we will mark it like this. This is the direction of electric field due to the negative charge. Or one more thing, you can put here minus. ओके यहाँ पे गाइज माइनस का मैग्नीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पे माइनस का सिर्फ एक काम है जो आपको डायरेक्शंस बताएगा. वो क्या बताएगा कि दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट्स इट. मैं अगेन बता रहा हूं, इस माइनस का मैग्नीट्यूड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है. ओके गाइज, सो वी नो नाउ two electric fields. Now we have to calculate our net electric field. Net electric field, just consider this as a E net. Okay, so what is for the net electric field? आपको पता है दो चार्जेस के बारे में आपको पता है तो आप net electric field निकाल सकते हैं very easily. What is that net electric field? Net electric field can be measured और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड जब हम इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ओके, एंड वी नो वेरी बेसिक फॉर्म, वेरी बेसिक थिंग जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमेशा एक बड़ी क्वांटिटी से आप एक छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं. ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए 1/4 कांस्टेंट है, यहाँ पे भी क्यू कांस्टेंट है. बट देखिए इसका डिनोमिनेटर जो है ये r माइनस एल, दिस डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन दिस पर्टिकुलर, sorry, this denominator is smaller as compared to this, so we can say this quantity is more as compared to this quantity. So we have to divide in fashion like 1/4 pi epsilon naught q upon r minus l to the whole square minus 1/4 pi epsilon naught and q upon r plus l to the square whole square. Okay guys, now we have to solve this equation. See what are all quantities are common here. So we will find here like 1/4 pi epsilon naught is common here and q is also common, so we can take q also out. So what is remaining here? The remaining is 1/r minus l to the power whole square minus 1/r plus l to the power whole square. Okay, now we have to solve with the normal mathematics like 1/4 pi epsilon naught, and if you are going to multiply these two things we can write like this, r square minus l square to the power whole square. And if you are going to divide with these things r minus l, you know that here what will get remain, that is r plus l to the power whole square. और अगर आप इसके साथ इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस है तो बचेगा यहाँ पे r minus l to the power whole square. ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और देखिए गाइस यहाँ पे आपको इसको एक्सपेंड करना होगा, इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, and same thing here also, a square plus b square minus 2ab. And after solving this entire equation you will find here that is called 4rl, means 2rl from this side and 2rl from this side, and we are going to add and it will come like 4rl, and remaining is same, r square minus l square to the power to the whole square. ओके गाइस, तो ये तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आया, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट. नाउ हमें पता है दैट वी नो अबाउट द dipole moment. Dipole moment can be denoted by P, and we can rightly say the formula of dipole moment is 2qr. Okay guys, so just apply this thing in this particular equation. So you will find here that E net after putting the dipole moment, see this is the q into 4rl, so you can separate this and in terms of 2qr. So instead of 2qr we can place P here, so just place P here. So you will find like this, this is 2pr upon 4 pi epsilon naught r square minus l square to the power whole square. Okay guys, so this is the final result of electric field due to a axial line after putting the dipole moment value in the original equation. Okay, now see here we have to make an assumption. Okay, देखिए assumption क्या है आप डायग्राम में देख सकते हैं. देखिए इस पर्टिकुलर L लेंथ को और इस पर्टिकुलर R लेंथ को आप एक बार कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो R है ये L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है.
ओके, तो किसी भी डाइपोल के लिए अगर आप इसको कंसीडर करें तो आपको पता है कि डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है किसी भी रैंडम पॉइंट के रिगार्डिंग, है ना। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि इफ एल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉलर और वेरी वेरी शॉर्टर देन आर स्क्वायर, जो कि पॉसिबल है, सो वी नेग्लेक्ट L square. So if you are going to neglect the L square, what is this equation will be? So just rewrite this equation, that is called E net, that can be equal to, that is 1 upon 4 pi epsilon naught into 2 p r, and see here L square will become 0 here and it will form r to square to the square, that it will become r to the power 4, and this r will get cancelled with this 4 and it will remain here 3 only. So again we will write this equation, that is E net is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. Okay guys, so this is the final result for electric field due to an axial line. ओके गाइज, सो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सियल पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो दिस इज द ओनली रिलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइज, देखिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस की। आपको पता है दिस इज नथिंग बट दिस इज द ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो देखिए गाइस, डायरेक्शंस के लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्शंस के लिए आप इस इंटायर थिंग को आप डाइपोल मोमेंट के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे और आपको पता चलेगा कि बेसिकली इसकी डायरेक्शन कहां है। तो इसकी डायरेक्शंस मैं यहां बताता हूं। ओके, देखिए गाइस, आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर डाइपोल मोमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए गाइस, यहां पे बहुत सिंपल है। देखिए ये प्लस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर फैशन में होगा, ये माइनस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर फैशन में होगा। लेकिन देखिए गाइस, ये पर्टिकुलर पॉइंट P जो है ये इसके ज्यादा नजदीक है, इसका जो डिस्टेंस है इससे क्या है, कम है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इस प्लस चार्ज का जो इंपैक्ट है इस पर्टिकुलर P चार्ज पे ये हमेशा ज्यादा होगा। ओके गाइस, तो नेट रिजल्टेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसकी डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा है। सो नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए गाइस, ऐसा होगा अगर आप इस पॉइंट P को अगर आप यहां रख दे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, और अगर आप इस पॉइंट P को अगर आप यहां रख दें तो क्या होगा, तब भी इसकी डायरेक्शन ऐसी ही होगी। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इसी डायरेक्शन के अंदर होगी। यानी कि आप कहीं पे भी अगर आप इस एक्सियल लाइन के अंदर अगर आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। दैट मीन्स कि व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर E has direction, E has direction as dipole moment, यानी कि एक्सियल लाइन के अंदर, एक्सियल लाइन के अंदर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही हमारी डायरेक्शन जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन एक्सियल लाइन है। ओके गाइस, ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है आप लोगों के लिए। CBSE बोर्ड की बात करें या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर से अगर मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक करूं अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस इज माय फर्स्ट पिक। ओके, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है और अगर ये पेपर में आएगा तो ये आपको 3 से लेकर 5 नंबर जरूर देके जाएगा डिपेंडिंग ऑन बोर्ड टू बोर्ड। तो आप इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत इजी है। आप इसके लेंथ पे बिल्कुल ना जाएगी, ये बहुत बड़ा है, इसमें क्या L स्क्वायर R स्क्वायर पता नहीं क्या कलेश मचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एक बार उससे चलें, प्रोसेस से चलें, ये बहुत इजी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द different type of arrangement. We will talk about the different type of arrangement. That arrangement is due to a transversal line or equatorial line. Till then, bye bye, take care, keep loving physics and keep loving physics.